Hello students, today we are going to discuss about the topic capital structure. This is the topic of business finance. Okay, so let us discuss about what is capital structure first. Capital structure means the type of securities to be issued and the proportionate amount that make up the capitalization. It means whatever the securities are there, like equity shares are there, preference shares are there, debentures are there. So what type of security a company want to be issued and the proportionate amount that make up the capitalization. It means, once again I am repeating, see, there are several securities. कंपनी के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं कि वो कौन सी सिक्योरिटी इशू करें, इक्विटी शेयर्स को इशू करें, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करें या डिबेंचर्स को इशू करें. Okay, so and the proportionate amount means ratio. There should be a proper a balancing ratio between the debt and equity. It means जो आपके borrowed fund है, जो कंपनी के borrowed fund है एंड जो कंपनी के owned fund होंगे, owned fund में आते हैं आपके equity shares, preference shares. ओके, सो जो कंपनी के ओन फंड है एंड कंपनी के जो बोरोड फंड है उनके बीच में जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट, एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए दैट मेकअप कैपिटलाइजेशन. इट मीन्स विच शुड नॉट लीड टू द शॉर्टेज ऑफ फंड एंड शुड नॉट लीड टू द सरप्लस ऑफ फंड. एक प्रॉपर सिक्योरिटी को इशू करना है, किस तरीके की सिक्योरिटीज़ को इशू करना है जिससे हमारी कंपनी में जो रेशियो हो डेब्ट और इक्विटी का, वो हमारी कंपनी में एक प्रॉपर फंड लेके आए, प्रॉपर कैपिटलाइजेशन करे, शॉर्टेज या सरप्लस ना करे. The ratio between equity and debt is called capital gearing ratio or financial leverage. When the proportionate of debt is high, it is called high gearing or ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी. अगर हमारा जो डेप्ट है, डेप्ट मीन्स अगर बोरोड फंड ज़्यादा हैं तो दैट इज़ नॉन एज हाई गियरिंग और ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी. क्योंकि अगर बोरोड फंड ज़्यादा हैं तो इक्विटी कम है, सो दैट विल लीड टू थिन इक्विटी. ऑन दी अदर हैंड व्हेन इक्विटी डोमिनेट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर, इट मीन्स अगर इक्विटी ज़्यादा है कैपिटल स्ट्रक्चर में, देन इट इज़ नॉन एज लो गियरिंग और ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी. इट मीन्स इक्विटी ज़्यादा है, थिक है. So this is about the capital structure, the meaning of capital structure. Now let us discuss about several factors affecting capital structure. There are around 9 to 10 points are given in your book, but I am discussing here 6 points. Okay, so factors affecting capital structure. First factor is trading on equity. We have heard this word so many times, trading on equity. Now what is the meaning of trading on equity? When a company uses borrowed funds in the regular conduct of business along with equity capital, it is said to be trading on equity. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है कि जब कंपनी बोरोड फंड भी रेगुलर यूज़ करती रहती है लेकिन इक्विटी कैपिटल भी उसके पास होती है. मतलब बोरोड फंड अलोंग विद ओन्ड फंड, अगर वो दोनों को इक्वली यूज़ करती रहती है, देन दैट इज़ नॉन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. When the rate of earnings of a company is higher than the rate of interest at which funds are borrowed, equity shareholders can get higher earning per share due to two reasons. Now here what they want to say, सी देयर आर टू रीज़न्स. अगर कंपनी जो अर्न करती है अगर वो ज़्यादा है एज जितना उसे पे करना है, आई विल टेल यू दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न. सी व्हाट इज़ द फर्स्ट रीज़न हियर? द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर दैन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेबल ऑन डेप्ट एंड प्रेफरेंस कैपिटल रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स, आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल सो दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस. सी सपोज एक पर्सन है ए एंड एक पर्सन है बी. ओके, सो कंपनी ए है एंड कंपनी बी है. कंपनी बी ने कंपनी ए से 10,000 रुपीज़ परचेज बोरो किए एट द इंटरेस्ट रेट 10%. ओके, कंपनी बी ने 10,000 रुपीज़ लिए कंपनी ए से, बोरोड फंड 10% इंटरेस्ट रेट पे, कि 10% इंटरेस्ट वो पे करेगा. देन कंपनी बी ने क्या किया, वही 10,000 कंपनी सी में इन्वेस्ट कर दिए एंड ही विल रिसीव द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%. आर यू गेटिंग? 10% वो पे करेगा एंड 12% उसे रिसीव होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो वहाँ पे एक ट्रेड ऑन इक्विटी आ जाता है कि जितना आप अर्न कर रहे हो वो ज़्यादा है कंपेयर टू द जितना आप पे करोगे, जितना आपका बोरोड फंड होगा. ओके,
Then second point, what they say, interest paid on debt is deducted from profit while calculating tax. This point we have already discussed. This point says that, see, when we have the interest on debt, again this one I will explain with the help of example. Suppose a company earns a profit of rupees 50,000, 50,000 तो उसका ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट है ना, उस पर उसको 10,000 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट किसी कंपनी को देना है। कोई बोरोड फंड है कंपनी के पास और उसे 10,000 रुपीज़ पे करना है, तो फर्स्ट ही विल पे 10,000 अमाउंट एज अ इंटरेस्ट। ना हाउ मच अमाउंट लेफ्ट, 40,000 रुपीज़ लेफ्ट। 50,000 उसका ओवरऑल प्रॉफिट था, 10,000 रुपीज़ उसने जो भी उसका इंटरेस्ट वगैरह था उसने वो पे कर दिया। अब बाकी अमाउंट बचा 40,000 रुपीज़, 40,000 पे इंटरेस्ट पे होगा। ओके, सो 40,000 पर वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वन। अगर कंपनी ने 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया, उस पर उसने 10,000 जो उसको इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट जो डेप्ट पे होना था, इट इज़ रिटर्न इंटरेस्ट पेड ऑन डेप्ट, वो पहले डिडक्ट होगा। ओके, सो अब सपोज 10,000 उसको पे करना था इंटरेस्ट, नाउ द रिमेनिंग अमाउंट इज़ 40,000, तो 40,000 पे टैक्स कैलकुलेट होगा इंस्टेड ऑफ 50,000। तो जो 40,000 पे टैक्स कैलकुलेट होगा, ऑब्वियसली वो जो अमाउंट होगा वो कम होगा। yes, so therefore this is what ये second point है, trading on equity which is beneficial for the company। and ये भी एक फैक्टर होता है, कंपनी डिसाइड करती है कि इक्विटी फंड में जो वो पैसा बोरो कर रही है और जो वो इन्वेस्ट कर रही है उस पर कितना उसको अमाउंट मिल रहा है। अगर वो ज़्यादा है देन अकॉर्डिंगली दे आर सेलेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कि कौन सी सिक्योरिटी ज़्यादा लेनी है, बोरोड फंड ज़्यादा लेने हैं या ऑन्ड फंड ज़्यादा लेने हैं। okay, so this is the one first factor which is affecting them for choosing the capital structure, that is trading on equity, कि किस तरीके की इक्विटी है, थिक इक्विटी है, थिन इक्विटी है। okay, and these are the two mainly reasons which affect the capital structures related to trading on equity. Now come to the second one, exercise of control. In a company, equity shareholders have voting rights and therefore control of the company lies in their hands. If the promoters of the company want to retain control in their own hands, they may not issue additional equity shares to the public. In such a case, more funds can be raised by issuing debentures and preference shares. It means, सी, अगर हम मोर इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे अपनी कंपनी में तो उतना ही ज़्यादा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा हमारी कंपनी में। यस, जितना ज़्यादा इक्विटी शेयर्स होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड उतना ही ज़्यादा कंट्रोलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी मोर शेयर होल्डर्स, देयर विल बी मोर नंबर ऑफ़ पर्सनस विल बी देयर हु विल बी कंट्रोलिंग द वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो उससे क्या होता है, उससे प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। okay, so in a company, if promoters of the company want to retain control in their own hands, जो board of directors हैं, जो promoters हैं, if they want डिस्ट्रीब्यूशन ना हो कंट्रोल का, सिर्फ कुछ ही लोग रहें कंपनी में जो कंट्रोल जिनके पास पावर हो, ओके, देन दे मे नॉट इशू एडिशनल इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक, तो वो ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट कि कितने इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं एंड कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं। exercise of control, if you want more control then you will issue more equity share, if you want few people to control then you will issue more of the borrowed fund, that is debentures and all. okay, then come to the third one, need for flexibility. A good capital structure should be flexible so that adjustment can be made whenever the need arises. Debentures and preference shares can be paid off whenever the company feels necessary, but equity shares cannot be paid off during the lifetime of a company. However, debentures and preference shares are generally not issued in initial stages because they involve a fixed burden of payment on the company's earning. सी, फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर होती है जहाँ पे लेस पीपल का कंट्रोल होता है एंड जब भी आपके पास एक्सेस अमाउंट है आप पे ऑफ करके अपनी लाइबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर्स में ऐसा केस नहीं है। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी आप पेमेंट करेंगे, उससे पहले आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट योर लाइबिलिटीज़।
ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करती है. इफ़ यू वांट मोर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देन यू विल इशू मोर डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. बट इफ़ यू वांट लेस फ्लेक्सिबिलिटी then you can issue more equity shares, then more be there, more shareholders will be there. And one more thing, when the company is at its starting point, means when the company start, when company commence, at that time preference shares and debentures are not easy, not easy to issue, because public don't have trust on new companies. So at that time equity shares can only be issued. So therefore this is also one of the factor which affect that what type of security should be issued, what type of flexibility company wants. Then fourth point is nature of business. What type of business is? If it is public utility undertaking, they required more of, they can issue more of borrowed fund as well as owned fund. See, let us study this. Companies enjoy regular and liberal earning. Example, public utilities can afford to have high capital gearing. High capital gearing means more borrowed fund, डेप्ट ज़्यादा ले सकते हैं पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स. लेकिन ऑन दी अदर हैंड बिजनेस फर्म्स, जो बिजनेस फर्म्स होते हैं जिसमें फ्लक्चुएशंस होती रहती है डिमांड में, अर्निंग में, वहाँ पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं लोग इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स पे. वाई? बिकॉज वहाँ पे परमानेंट बर्डन नहीं रहता इंटरेस्ट का. लेकिन जो पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स हैं, जो दे आर गेटिंग द हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट. ओके, सो दे कैन हैंडल द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो. तो वहाँ पे वो लोग अपने डेप्ट ज़्यादा कर सकते हैं. लेकिन जो बिजनेस फर्म्स हैं जो बार बार फ्लक्चुएट होती हैं, जिनकी अर्निंग्स फ्लक्चुएट होती हैं कि कभी प्रॉफिट हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस वो मेनली इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को ही इशू करते हैं. बिकॉज उसमें ना तो चार्ज ऑन एसेट होता है एंड ना ही बर्डन ऑन अर्निंग्स होता है. सो देयर फॉर इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एज वेल. देन next one is period and purpose of financing, that for how much time you need a finance. ओके, फाइनेंसिंग का पर्पस क्या है? अगर परमानेंट फाइनेंसिंग चाहिए देन यू विल इशू इक्विटी शेयर्स. अगर परमानेंट फाइनेंसिंग नहीं चाहिए, यू रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन यू कैन टेक अ बोरोड फंड, दैट इज डिबेंचर्स और लोन. For funds required for permanent investment, equity shares are the appropriate choice. Debentures and preference shares are preferable for medium term finance. Modernization and expansion programs may better be financed through preference shares and debentures. Finance needed for expansion of capacity may be raised through fixed charge security, as expansion is likely to increase the earning capacity of the company. So, if you need a money for a short period of time, okay, then you can move to the, you can issue debentures or borrowed fund. But agar if you need for permanent or for a long period of time, then equity shares are better to issue. So period कितने time period के लिए चाहिए and for what purpose? If it is for modernization expansion के लिए चाहिए, then in that case you can have the debentures or borrowed fund. But if you need amount for purchasing fixed asset, for land building, then in that case you can take for you can issue equity shares. Okay, then come to the sixth point, capital market conditions. The state of capital market influence the choice of securities to be issued. During boom, investors are willing to take risk and invest in equity shares. अगर market condition अच्छी है, high उस पे है, then that case investors risk लेने के लिए तैयार होते हैं. So depend upon the market condition also. But in a bearish market or downswing, investors prefer safe investment. कुछ investors होते हैं जिनको safety, एक safer side चाहिए, safe investment चाहिए. So they require the safe investment, means they require debentures in which permanent interest they will be getting, uh, irrespective of company's earning. Then, therefore, preference shares, debentures carry a fixed rate of return, are likely to be more marketable in a depression. अगर market condition अच्छी नहीं है, low है, then in that case investor required a safe investment. Then in that case you company can issue only debt. Okay, but अगर investors risk लेने के लिए ready हैं, then in that case company can issue equity share. So this is also one of the factor which affect the capital structure, that is capital market condition, that what is the market condition is there.
Okay, so these are the several factors which affect capital structure. It is one of the important topic among finance. I hope you understand. Thank you.